आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जजमेंट आपने वो देखी है जिसमें ये इंटरप्रेट हुआ है? जी जी मैंने ये आपको रिप्रोड्यूस की है। अच्छा, पहली बात एक चीज मुझे बता दें, आप क्या अग्री करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो करे वो कर सकती है? सर मैं एग्री करता हूं इस चीज से कि सुप्रीम कोर्ट जो करे वो कर सकती है। अच्छा रुक जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, मैं नहीं अग्री करता हूं, ठीक है, ठीक है। और हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जिस किस्म के प्रेसिडेंट्स विलायत में बनते हैं, कॉमन लॉ जिसको हम कहते हैं, हमारे उसमें आइन में इंदराज हो गया है। जैसे लफ्ज आ गया ना, डिफेंड, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये अदालत, और मैं खुद एतराफ़ करता हूँ, और जब तक आप एतराफ़ नहीं करें सलाह हो ही नहीं सकती है। वो आया, कोई शख्स आया, जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आइन को आप रोंद लें, आप आइन को बदल लें। तो ये अगर हम इस पे चलें तो फिर इसका मतलब है हर बेंच जब उस वक्त में फैसला करेगी वही लागू होगा। आइन का तो कोई अहमियत रही नहीं। फिर तो जजमेंट लॉ पे हम चलेंगे, आइन को एक तरफ रख दें। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का मूड ये है कि मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला सही है और 4 जजेस जो सिंध हाई कोर्ट का उनका गलत है। फिर मूड हुआ कि जी 200 केस में वैलिडेशन और मार्शल लॉ तो सही है। फिर जिलानी केस में नहीं आज सही नहीं है, नहीं फिर सही हो गया और फिर नहीं सही हो गया। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बुनियादी सवाल तो ये उठता है, आप क्यों नहीं आप हिम्मत पकड़ते हो कहें सुप्रीम कोर्ट गलत थी? क्योंकि आइन सर अगर माइंड वो बहुत सारे उनके क्वेश्चंस थे। कमिंग बैक टू माय लॉर्ड जस्टिस इजाजुल हसन's क्वेश्चन, ये जो इंटरप्रिटेशन है 191 की, हाउ डू वी रीड इनटू दिस प्रोविजन दैट subject to law means a restriction in the law and that the primacy is to be given to the rules made by the Supreme Court? ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना सर। जो 191 की पास है, दे आर डायरेक्टली कमिंग, जो मंसूर शाह साहब ने भी क्वेश्चन किया था, they are coming directly from the constitution. So वो constitutional power, and the question also arises, can the constitutional rule making power can be stultified by a sub constitutional legislation? They cannot be, because whatever has to be done, it has to be done through an internal mechanism. ये तो आप दोहरा रहे हैं अपनी बात को, नहीं दलाइल दीजिए ना। मैं अगली बात के ऊपर सर एक मैं सिर्फ बात कर लूं, जो जवाब जो था वो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन इसी कंटिन्यूएशन में सवाल देखें ना, आप ये 191 की बात कर रहे हैं, वो तो जो उसकी ओपनिंग वर्ड्स है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो मैं समझा एज फार एज आई एम कंसर्न, इसमें तो शायद ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के, लेकिन दैट मस्ट बी सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट का इख्तियार है। उन इख्तियार के तहत, उस लॉ के तहत जो भी रूल्स बनेंगे, हम उस रूल से, उस लॉ से हट के बाहर नहीं जा सकते। क्या इसका ये मतलब नहीं? यही क्वेश्चंस तो आप लोगों ने रिजॉल्व करने हैं। इफ द मेजॉरिटी विल तो फिर करने, तो फिर आप बैठ जाइए, हम कर लेंगे। मैं आपकी जरूरत नहीं है, आप तशरीफ रखिए। फिर आप मेरी बात को सुने। द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट 191 को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। 191 में सिर्फ नहीं, मगर आप बात ही नहीं समझे। अगर आप उसकी ओपनिंग वर्ड्स देख लें, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, माय लॉ, जरा सुन लीजिए ना। जैसे जमाल साहब ये कह रहे हैं, तो ये एंड लॉ लिखने की जरूरत क्या पेश आई? सिर्फ लिखते सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ये लॉ जो दो लफ्ज हैं, इसको हम कैसे इसकी तशरीह करें, ये सवाल है। सर इसमें एक जवाब तो ये है कि जिस वक्त ये रूल्स बने थे, अगर कोई लॉ मौजूद, हम आइन की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। जी मैं आइन, सर जिस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए थे, उस वक्त अगर कोई लॉ मौजूद होता तो उसके आप फॉलो करते, विच आपका कहना ये कि जब आइन बन रहा था उनको ये पता ही नहीं था। सर द क्वेश्चन इज दिस, जिस वक्त आइन बन रहा था, आप ये बताएं कि सब्जेक्ट टू का क्या मतलब है? इज दैट एन इनेबलिंग पावर? डज इट गिव कॉम्पिटेंस और इज दैट अ लिमिटेशन? Does that restrict the power? Because the understanding, one understanding is that subject to constitution and the law is where the competence is being derived from.
Whereas the other understanding can be that subject to, the prefix subject to is a limitation. Now, the other question that goes with the understanding of law, if law is more than just an act of parliament, and law can mean rules, regulations, ordinances, policies, whatever is in the field of law. So all that will govern the ability of the Supreme Court to make its rules for practice and procedure, because law is much more than, it involves more than just an act of parliament. If we go by the words which are used in the Constitution, an act of parliament is different from the use of the word law. Which is why subject to becomes relevant. Relevant. So what does subject to mean? It means... But if I may be allowed to complete my point of view is that under Article 191, only Supreme Court has been given the power, whereas in the Constitution, if your Lordship see Article 67, 72, where देखिए हसन साहब आप जवाब देते नहीं हैं, आप दूसरी जगह चले जाते हैं। सर मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर दूं ताकि आप सब्जेक्ट टू का मीनिंग बता देना जी, हाउ शुड वी रीड इट? सवाल एक हुआ ना, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो रूल्स उसको फॉलो करें। यही पूछ रहे हैं या नहीं, जवाब भी देते कोई भी नहीं है। हसन साहब, ये रिस्ट्रिक्शन की क्या बात है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें। सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, रिस्ट्रिक्शन का कोई इशू ही नहीं है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल बना सकता है। अब ये लॉ आ गया, इसमें भी अगर हम कुछ चाहे तो हम रूल बना सकते हैं, क्योंकि ये लॉ के अंदर कोई चीजें आई हैं, मिसाल के तौर पे उसको रेगुलेट करने के लिए रूल बनाने की जरूरत है। सुन लीजिए, कोई भी सेक्शन ऐसा है उसके लिए भी हम रूल बनाना चाहें तो विद इन द प्रेमिस ऑफ दैट लॉ सुप्रीम कोर्ट में रिवाइज द रूल्स बिकॉज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। बात समझ आई आपकी? सर अब क्वेश्चन एक अराइज ये होता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन और इनलार्जमेंट का इशू नहीं है, ये दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। एब्सोल्युटली सब्जेक्ट टू बहुत जगह इस्तेमाल होता है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन-ऑब्स्टेंटिंग क्लॉज। तो ये जो है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब? आपके सुप्रीम कोर्ट कहां से बना है? नहीं, दैट इज राइट। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो भी लॉ होगा चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हो, लॉ में मौजूद हो, हम उसके मुताबिक रूल बना सकते हैं। चलेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो इस लॉ के बाद भी हम रूल अपने अमेंड कर सकते हैं। सर क्वेश्चन ये है, कोई क्वेश्चन ऐसा है आप बना सकते हैं, बट क्या राइट ऑफ अपील है? राइट ऑफ अपील है, उसके लिए हम अपने रूल में कर सकते हैं कि इस अपील को हम किस तरह हैंडल करेंगे। राइट ऑफ रिव्यू है, हम चाहें तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका कोई इतना नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं है कि सब्जेक्ट लिख दिया तो बस हाथ पैर कट गए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया पूरा। देखिए, दैट इज फॉर योर लॉर्डशिप्स टू डिसाइड। व्हाट माय सबमिशन इज phraseology subject to itself, the phraseology used subject to the constitution means if there is a restriction in the constitution, absolutely, you cannot go beyond that. It's not beyond that. Subject to law means It's correct. unless restricted by law. But kaun sa law which exists for the reason कि subsequent legislation के लिए relating to the Supreme Court there has to be a specific authorization in terms of 55 item 55 जो specific authorization नहीं है सारी constitution में। That is the precise question your lordship। नहीं मिस्टर हसन, आप हर चीज पे precise question वो कहते हैं, अपना तो आपका जवाब ही कोई नहीं। जवाब तो whoever says whatever to you agree with that। अच्छा नहीं, आप देखें सवाल आपसे ये है जो I'm just adding to what Justice Ijazat just said। 191 की बड़ी important interpretation का सवाल है हमारे सामने। एक ये सवाल इस तरह भी पढ़ा जा सकता है 191 को, and that's what we want you to assist us with, you see, whether at all 191 envisages that there can be a law made by the Parliament that regulates practice and procedure, and once that law is there, then the Supreme Court rules will be subject to that law. So the fact that it is mentioned there that there could be a law relating to practice and procedure makes it an enabling provision. Is that a correct interpretation or not is a question I'm asking you. Subject to law, constitution and law, is that an enabling provision because the constitution is saying that there could be a law relating to practice and procedure
meaning by that there is a substantive power given to the Parliament to make law relating to practice. Is that a correct interpretation? And could we, if we have any problems, could we just tag along entry 58 with it to then make this complete? ये पहला सवाल आपसे पूछा, जवाब प्लीज दे दें कि आप ये पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लॉ के लिए लॉ बना सकते हैं, वरना उस लॉ का क्या मतलब है 50 आर्टिकल 191 में? रिडंडेंट हो गया वो लॉ कवर्ड। मैं जवाब दे दूं अगर आप इसका जवाब दीजिए, कब से मुंतजर हैं सर। अगर आप 191 को आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो आपकी बात ठीक है कि लॉ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप 191 को 142 और एंट्री 55 से पढ़ेंगे उससे क्या पढ़ेंगे तो उसमें पावर नहीं है, तो उसमें पावर नहीं है। ओके चलिए ठीक है, आपका जवाब आ गया। अगर जरा घड़ी देखिए और टाइम आपका कितना हो गया जरा। आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैंने तो अभी आर्ग्यू ही नहीं किया, क्वेश्चन ही आंसर कर रहा हूँ। इसी तरह होता है, डोंट वरी। आर्टिकल 191 में जो ये पावर, ये जो सब्जेक्ट टू लॉ है, कैन पार्लियामेंट make a law in exercise of Article 191, repealing the Supreme Court rules 1983. So that is what. Let's take it one step. यही तो सवाल है आपसे कि क्यों नहीं? अब अगर आप हर दफा ये सर उसमें इबहाम है ना, दैट इज, ये तो आपने इंटरप्रेट करना है। तो छोड़ दीजिए, नहीं है, आप बैठिए, फिर हम कर लेंगे हम इंटरप्रेट। आपका क्या फायदा? शुक्रिया। सर मैंने तो आपको आप मेरा मेन पॉइंट है। चलिए फिर दूसरे हम उनसे पूछ रहे हैं। I have some questions for you, so stick around at this rostrum. Now you say that the law that Parliament can make under 191 cannot repeal the Supreme rules made, which are currently the Supreme Court rules 1980. Absolutely. Can there be an implied repeal? They cannot. 8. They have provided a overriding clause, which effectively is an implied repeal. But you say that can't happen. So if Parliament makes a law like this, and there is a conflict, and here is the conflict, I'm giving you one example of it, how will that be resolved? So that will be very difficult to resolve, because I would humbly submit that my answer to your question would be that the Parliament has got no power to do that. Because Parliament, sir, your function cannot be controlled by the Parliament. That's against the. Now, if I may, in light of this very interesting debate that has, or discussion that has been going on, what does subject to law mean? If I may draw your attention to the 1956 Constitution. In that Constitution, the third schedule provided the rule-making power of the Supreme Court. ठीक है? और आप उसका आर्टिकल 177 पढ़ेंगे। है आपके पास किताब? जी 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का रूल मेकिंग का। नहीं, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में रूल मेकिंग पावर थी सुप्रीम कोर्ट की। 56 कॉन्स्टिट्यूशन दें जी। अगर मैं इन द मीन टाइम मैं आपको पढ़ देता हूँ, जी ठीक है? उसके that had to be read with Article 177. Now this is very interesting, and my question to you is whether the language as used in Article 177 and the language used in Article 191, is there any difference? 177 of the 56 Constitution said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, the provisions of the third schedule shall apply. Right. So it seems to me that here was a direct enabling grant. Third schedule said rule-making power is with the Supreme Court and the High Courts, but 177 said until other provision in that behalf, other provisions in that behalf are made by Act of Parliament. Here the language is not like that at all. And if we regard law as used in 191 to be an enabling power, then that sets up this conflict between, because the law cannot repeal the Supreme Court rules, there can't be an implied repeal. So maybe one possible way of avoiding this conflict is to read law as meaning that it is only it can only apply a break, or let's say it's not an enabling power.
Because the framers of the Constitution did have Article 177 before them. They could have followed this language. They could have said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, Supreme Court may make its rules. They didn't do that. If you are right, and as you say, it is for us to ultimately decide, if the law cannot repeal the Supreme Court rules, if the law cannot impliedly repeal the Supreme Court rules, then where does the conflict go? And maybe if to regard it as not an enabling power allows for the conflict to disappear. Because the rules have the constitutional power. That is also a question, that whether the parliament can undo a thing which has been done exercising the constitutional power. The parliament cannot. That is the answer. See, in Baz Mohammed Kakar, this court has very specifically held that because these rules have been framed in exercise of constitutional powers, they cannot be displaced, amended, modified, overruled by ordinary legislation, because these rules stand at a higher pedestal. This is what I have actually reproduced Baz Mohammed Kakar's citations on that basis. Yes. Mr. Hassan, I believe it will be last अब आप कितना टाइम लेंगे आप बता दीजिए मैं पॉइंट्स को सिर्फ आपको कर रेफर लीजिए कर देता हूं खत्म कि हाँ सर अमीनुद्दीन साहब का The क्वेश्चन question is whether we were able to frame rules in 1980 in derogation of the existing law at that time. My lord, my honest answer would be no, if the law would have existed. then Because the this is an exercise which has been done. rules So are perhaps subject- one way to look at it would be that if you were to look at your rules in future, but then you would have to see whether the law provides for anything which is within the constitutional No, framework or no, not. the That's a very question- important the- question the which we second are part is missing out. Because that here, in fact, one of the other aspects that this committee is doing, it is preventing an access to the Supreme Court directly and preventing the Supreme Court from making an order. This is the question. If the parliament legislates, which is as per your contention in contradiction with that rules, it is the basis for striking down of the legislature's legislation. Yes, if it is in conflict with the clear provisions, very simple provisions of the Constitution, it is a reason to strike it down. If I may follow up on that, you see, the 1980 rules replaced the rules of 1956, the Supreme Court rules 1956. The Supreme Court rules of 1956 were existing law within the meaning of Article 268 when the present Constitution came into force on the 14th of August 1973. That is when the power of, or the jurisdiction, whatever you want to call it, if such jurisdiction exists, of Parliament to make a law came into being under Article 191. So there was no vacuum, there was no break. As soon as that power came into existence, there were already the Supreme Court rules in the field, the ones of 1956. So therefore there was a continuity perhaps. All that happened was that in 1980 those rules were changed. So if I may ask you my question in a slightly different form, could say in 1974, 1975, 1992, sorry, not 1990, say in 1973 or 1974, 1975, could Parliament have made a law under 191 repealing the Supreme Court rules of 1956? No. No, absolutely not. So the same, so the enabling aspect of it, The fundamental point that I like your brevity. Ji? I said I like your brevity. Learned Council. You say yes, no, Learned Council. which we really appreciate. Learned Council. Are we concluded? Because I want to hear you say something more, Learned if you want to say something more. Learned Council. Your Lordship would allow me, I have submitted, I am Learned still Council. answering the question, my Lord. Learned What Council. can I do? I like your brevity. Learned Council. This is a question for you and for all the councils. Can you cite any example from any jurisdiction around the globe that give precedence to rules made by an unelected court over a primary legislation made by a competent forum?
Your Lordship, I would respectfully submit. In fact, I wanted to make Your Lordship may rethink and rephrase this. Answer the question again. You're doing this. I would respectfully say. This is not answer the question. This is not an unelected court because भाई this आप is a जवाब दे court देना कहीं दुनिया में होता है which is created by the दुनिया में पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से बाला कोई रूल्स हो सकते हैं तो वो साइट कर दीजिएगा एग्जांपल। जी मैं आपको करके उसका जवाब मैं दे दूंगा बट जो क्वेश्चन है रूल्स जो है दे हैव टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। चलिए फिर आप दे दीजिएगा जवाब दे दें। मतलब माय नेक्स्ट हसन साहब इसी क्वेश्चन में इसको बढ़ाते हुए क्या आपके कहने का मतलब जो मैं समझाऊं आप कहते हैं कि ये रूल्स वंस फ्रेम्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड और अगर ऐसी कोई बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप बताएं क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन लेट्स पुट इट अनदर वे if there is no bar there is no permission also and this is what we are arguing since morning that there is no permission for the parliament to make the law हम वापस उस पे आ जाते हैं if there is no specific bar there is no permission at all your lordship there is a way to look at the constitution हम वापस 199 में आते हैं opening words है the rules must be subject to law and the constitution and the law but who will make रूल्स ताबे हैं कानून के और कानून 142 में बताया गया पार्लियामेंट का काम है टू मेक लॉ। मैंने शुरू में एक आर्गुमेंट देखिए आप जरा आप बात की देखें वही बात बुनियादी बात वहीं ठहरती है उधर ही है सर आप सुन रहे तो लेना वो जो एजाज साहब का सवाल था देखिए अगर ये कानून में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि गैर आईनी हैं तो उनको तो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है मगर एजाज आपका सवाल अपनी जगह है वो आप सवाल वो तो आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि वो बना सकते हैं या रूल्स या नहीं वो आप हाँ या ना जवाब दे देते हैं हमें और चलिए फिर अगर यही जवाब है तो हम सुन लेंगे। सर मैंने जवाब तो दिया था उसका आपने तो आप कह देते हैं ना हाँ बस सर मैंने तो लॉ से हम किया हुआ है हम आपको आर्टिकुलेट कर रहे हैं बेहतर चीजें मैंने तो जवाब दिया हुआ है जनाब को अगर तो नहीं फिर अगर नहीं है तो फिर वक्त जाहिर ना करें तो किसी और को मौका दे दें। मैंने तो सर जवाब दिया हुआ है कि वो नहीं छोड़िए ना फिर आप रोस्टर में अगर आपको कोई वही बातें अगर हमसे एग्री या डिसएग्री करेंगे और बता देता हूँ सर जल्दी कर लें प्लीज। सर दिस लॉ affects brevity is the soul of wit. Absolutely. Thank you for agreeing. For a change, I believe. Sir, the Constitution has created a balance between the three pillars. Please, अब ये बात कितनी दफा कर चुके हैं trichotomy of powers की? Sir, नहीं, मैं it's a different point है. After 18th constitutional amendment, the Chief Justice, जो पुराना concept था Chief Justice is first among the equals has gone away because the Constitution has now given a provision in the Constitution where the Honorable Chief Justice has a supremacy or a primacy at least to the extent of the administrative functions because the Constitution has provided a provision that the senior most judge would be entitled to become the Chief Justice. And there are other functions in the Constitution which are ascribed. This is what. So what I am saying. I mean, it's obvious. It's written there. What's so profound here? उसके Constitution के consequences है ना. Mr. Hassan, we will not permit this. हर चीज का एक सर meaning है ना. अगर आप उसको देखें तो वो बात आ जाएगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को आप इस तरीके से थ्रू अ सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन नहीं कर सकते है ना कोई मजीद बात कर लें ना मजीद कोई पॉइंट कर लें वही आप बात 6 दफा करेंगे। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस जो मैंने केस लॉ इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस और इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो एक इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम मैंने केस लॉ आपको दे दिया है। एंड माय लास्ट पॉइंट जो अपील के अंदर मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया था कि अपील 185 के अंदर देखिए उस पर आपने बिल्कुल बात नहीं की और मंसूर साहब ने ये बात की थी। इस कानून में 2 चीजें हैं नाम तो इसका सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है मगर एक सब्सटेंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है राइट ऑफ अपील वो ये 2 चीजें अलग अलग हैं। इसका नाम शायद हो सकता था जरा कुछ और मगर ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को नहीं कर रही है एक सब्सटेंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है। उधर उस पे आपको अपनी राय देना चाहते हैं? जी जी सर उसमें फिर 185 पढ़ लीजिए। हम नहीं पढ़ेंगे अपनी राय दीजिए ना। अपनी राय नहीं हसन साहब उसमें उसके लिए अगर आप एंट्री 58 एक सेकंड पढ़ेंगे। जी सर एंट्री 58 सर उसमें एक सवाल है आपसे अगर आप जवाब दें एंट्री 58 जरा पढ़िएगा तो फिर सवाल
which under the constitution are within the legislative competence of Majlis al-Shura or relate to the federation. 55, sorry. 55 were jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. आप इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या मानी है इसके? Enlargement है या ये सब वो है retraction है? और खास तौर पे जो to the extent by the Constitution under the Constitution इनके क्या माने हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, आप देख। सवाल तो ये है ना कि इसमें ये देखिए मासून हसन, सवाल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से हो सकती है जिस तरह ये की गई है, और उसके जो यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी कि वो किन सर्कमस्टांसेस में हुई है, वो रिपोर्ट आई है अभी तक? वो रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक। सर दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मेरा इसमें मैंने तो आर्ग्यू किया है, वो आप कहें मैंने नहीं आर्ग्यू किया। मानी बताइए जी, आपका सवाल का जवाब ये है कि सर एंट्री 55 के अंदर हाउ यू अंडरस्टैंड एंट्री 55? Sir, this relates to jurisdiction and powers of all the courts except the Supreme Court with respect to any matters in the Constitution means that anything which is either provided by the Constitution or under the Constitution which would, your Lordship would deduce through an interpretation. Are they interchangeable terms? Included in that. Because by the Constitution means that it has to be included in the Constitution. Whether it is expressly provided in the Constitution or by implication provided by the Constitution, but there is a question here. No. You see, enlargement, the But word. what it आप relates जवाब to, तो देना पहले सवाल। सर उसका देखिए आपसे पूछा है ना by और under क्या under by the Parliament है, by the Act of the Parliament है, under the Constitution। under the Constitution से क्या मानी, कोई reference देना? Under the Constitution which is provided and in the Constitution would include everything and anything which is in there. Mr. Hassan, would you're be not, a power to make Hassan legislation. Sahab, you're not adding anything useful. Sir, मैं बस conclude फिर आप इसको conclude ही एक कर चीज रहे सिर्फ हैं। बता दें, enlargement implies that something already exists and it is being enlarged. Now, providing a fresh appeal is conferring a jurisdiction or enlarging a jurisdiction? It's conferring the jurisdiction. It's not enlargement. It is not. Why? Because it does not exist previously. So anything which maybe enlargement would be which is already existing and your lordships are given additional powers to do that, or Can you cite an example? Cite an example. Learned Council, ये अपील जो है, ये अपील किस jurisdiction और power की remedy है? sorry, किस power और jurisdiction की remedy है? The appeal 184(3) की है. जी That power already exists सर and it's only a continuation of the same power. सर 185 के अंदर 184 की अपील does not exist with utmost respect. Learned Council जो my lord ने सवाल पूछा वो है, सवाल के ऊपर कि अगेन देखिए ना, देखिए क्वेश्चन ये है कि if your lordships are to read into the constitution then that's a different question. The question is 184 is before 185. ठीक है? सारी जो अपील्स सुप्रीम कोर्ट के में प्रोवाइडेड हैं वो हर उसकी तमाम सूरतें 185 में मेंशन की गई. If the framers of the constitution wished to provide an appeal under 184, they could have easily added something in 185 saying 185 के अंडर 184 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है. आर्टिकल आइटम 55 में enlargement का यूज वर्ड इस्तेमाल करके ये कहना कि जी हम एक नई jurisdiction क्रिएट या कन्फर कर सकते हैं, is that doable? और उसी में मैं ऐड कर दूं कि कंपटीशन कमीशन एक्ट में अगर अपील है और काफी कवानीन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील आ गई है, तो फिर वो तो एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई जुरिसडिक्शन लार्ज सर वो कैसे फिर अपील आ गई? we are trying to mix the two things. That is by virtue of another entry in the constitution, the legislation relating to that has got nothing to do with 184 power. जी मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, एंट्री 55 में स्पेसिफिकली enlargement of jurisdiction डील करती है, तो we will not go to any general entry, we'll go to this specific entry first
which says that enlargement of jurisdiction can be either expressly given in the constitution, और अंडर तो का मतलब ही नहीं अभी तक आपसे आया, लेकिन चलें बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली, तो फिर कंपटीशन कमीशन की अपील कैसे आ गई? सर उसमें जो अपील जी जी provision. सर 185 को जब आप पढ़ेंगे 185 के अंदर अपील मैं कंपटीशन कमीशन के चलिए हसन साहब, यू नॉट सर, रियली आंसरिंग एनीथिंग. नो नो, यू आर नॉट आंसरिंग, सॉरी टू से. तो आप किसी और को दे देना, अब काफी हो गया ना. अब देखें 1 बज रहा है, अब आप कितना, आपने आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा कहा था, मैंने आपको 2 घंटे दे दिए हैं. सर मैं एक मिसाल देता हूँ आपको. आप एग्जाम्पल की बात हो रही है, देखिए मैं लास्ट डेट पे भी मैंने क्वेश्चन किया, उसका जवाब नहीं आया. आपके लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो 199 है, उसके लिए एक अपील प्रोवाइड की गई है. उस अपील को बाद में 269 आर्टिकल 269 में उस जो आपके ऑर्डिनेंस था, मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया कि ये जो ऑर्डिनेंस के तहत एक अपील की रेमेडी दी गई है वो दुरुस्त दी गई है. वो भी कॉन्स्टिट्यूशन, वो कि वो हाईकोर्ट से मुताल्लिक है, नो डाउट, लेकिन हाईकोर्ट को भी 202 कंट्रोल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को 191 कर रहे हैं, दोनों सेम लैंग्वेज है. अगर 199 में अपील की रेमेडी आज तक चली आ रही है, क्यों ना 184(3) में आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए? वहां होनी चाहिए बेशक हाई कोर्ट से. सर वो सिविल प्रोसीजर कोड की अमेंडमेंट के थ्रू अपील है, दैट इज अ डिफरेंट reforms कॉनोटेशन. ordinance हियर है इट्स अ वो. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट्स अ डिफरेंट कॉनोटेशन. वो तो हम उसको दो चीजों को इंटरलिंक नहीं कर और सकते. आइटम 55 में हाई कोर्ट के मुतालिक लेजिस्लेशन पे कदगन नहीं है. कोई भी नहीं है. Yes, Mr. दूसरा Bandari, आपसे पूछा I था think enlargement. you want to I now still take have the a rostrum. question. I have a question. I have a question. ये जो आपसे enlargement of jurisdiction पूछा था, I go back to the question कि जो constitution of benches है, वो कौन सी jurisdiction है under the constitution जिसको enlarge किया जा रहा है? कोई भी नहीं है. वो तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस तो रूल्स में बनाई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रोविजन नहीं है. दैट्स इज द होल. That's not an enlargement of jurisdiction, or is it a jurisdiction? That is all. In fact, that is a jurisdiction. That's not an enlargement of jurisdiction. Mr. Constitution Hassan, of benches are by way of the rule-making part that the court has decided that benches is formed. So that's not an exercise of jurisdiction? England के अंदर they have actually formed a special law for that. कि ऐसी जबानी बात ना करें, लॉ का हवाला दीजिए. सर इंग्लैंड में ऐसे लॉ हो गया, ऐसे नहीं करें ना, दें चीजें हमें फिर. मिस्टर हसन, इस लॉ में दो चीजें हो रही है ना, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, एक अपील की जुरिस्डिक्शन की बात है, तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसको सेपरेट रखें. बिल्कुल सेपरेट करें. खान बंदारी साहब शायद बेहतर जवाब दें, शायद या सुनते हैं इनको. जी सर, बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच फॉर. Thank you. You are a petitioner? My lord, I am representing PTI. Your lordship said. Are you a petition number? My lord, notice was issued in all petitions. Have you filed something? My lord, I